So I'll resume. So till now, what I was showing you is manual editing of the curve, right? The other editing option for the curve is to extend. You can go to the curve, right? And you can go to something called as enlarge curve option. Since I had fixed the curve at the intermediate section by manually editing it, I wanted to just increase the length on the anterior and posterior tips, right? So now what I'll do is I'll just select the curve. In the enlarged curve, the length of the curve I want 10 and I want it to be perpendicular, tangent to the last segment, and you can click apply. So you will get your curve correctly. Now let's try with this curve that I've extended. So design, sweep loft, sketch 1, sketch 2, let this be my pattern, just try, apply, right? So this is something that has been created. This is without me giving. So when I compare this with my anatomy reconstruction, you see the shape you've received is far in line with the mirrored mandible. Just transparent this, right? It's a little higher as we go. Now what I'm going to do is I'm going to give the intermediate profile as well. So that's my sketch 1, that's sketch 2. You can give multiple intermediate profile, there is no limit. I'm just taking one. And my sweep path will be the curve. I'm going to click apply. So if when you see I've given us intermediate profile, the length has increased, the height has increased, sorry. So I'm just want to close this, I want to close this. So I'm just going to now place right. You see, this is a better height for implant placement. So since I just given one, this is the output. You can also give some, another input somewhere here. Add the coronoid process and the angle and get a better shape here, maybe something like this. So once you've received or you're happy with a surface that you've designed, right, you will suppose to. So with sweep loft, what you'll observe is it's an open surface. So you'll have to first close the surface at both the ends. So I'm going to do fix fill hole freeform at both my surfaces.
And since I observe a lot of irregular structure here, मैम हम लोग कॉन्डाइल भी तो इम्प्लांट में इंक्लूड कर रहे हैं, yes, लेकिन इसमें तो है नहीं। हमने कॉन्डाइल ऑलरेडी सेट करके रखा है ना। अच्छा, वी आर वो गोइंग टू, अलग से। यस, वो भी हम लोग इसमें सबको मर्ज करेंगे, कंबाइंड कंपोनेंट बनाएंगे। पहले ये वाले कंपोनेंट को रिफाइन करेंगे ठीक से, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, आपको सारे अच्छा। एरर्स और ये दिख रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मूथ सरफेस बेसिकली। भले ही आपका अभी हाइट बढ़ चुका है, जैसे आपका एंगल भी इतना अच्छा नहीं आया, तो अगर आप एंगल के साइड पे भी एक और स्केच देंगे ना, और उसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सारे एरिया स्केचेस में वो जो ड्रॉ किया है स्प्लाइन से, if you draw something similar for your coronate process and your angles also, you'll get better structures, right? So I'm going to now just smooth this. इसको अगर मुझे इम्प्रूव करना है, शेप को काफी इरेगुलर है, तो मैं पहले इसको थोड़ा स्मूथ करूंगी पूरे कंपोनेंट को, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक अप्लाई। तो I think you can see the difference in the mesh. I'm going to smooth again once more, right? अभी कहीं कहीं पे I would now want you to अंडरस्टैंड फिनिशिंग पैरामीटर्स जो आपको हमेशा मैनुअली करने पड़ेंगे। ये पुश एंड पुल का ऑप्शन है, so I went to finish and I chose push and pull. Now what push and pull does is it's basically like a sculpting tool. ये आपको कहाँ कहाँ पे जो एक्सेस दिख रहा है वो इधर पुश करने में या पुल आउट करने में हेल्प करेगा। So let me first set my entity as sweep lock part. My distance is 0.5. You can choose whatever is convenient. Before moving it push and pull, let me just save this file once. I've not saved it. यस, सेव कर दिया, और मैं इसका इम्प्रूव मैश भी करके इसको एक थोड़ा लाइट कर दूंगी फाइल को। तो आई विल डू इम्प्रूव मैश एंड अप्लाई। It's a much lighter file to work with now. I'm going to go to finish. तो यहाँ पे आपको जो बम्पी बम्पी सरफेस दिख रहा है, राइट, यू हैव टू ऑल मैनुअली डू दिस। मैनुअली बेसिकली स्कल्पटिंग करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है लोकल स्मूथनिंग एंड पुश एंड पुल का। So I'm going to use push and pull here. I'm going to set my entity as sweep loft, एंड यहाँ पे जो गैप है मैं डाया को एडजस्ट कर रही हूँ अपने, सच दैट जो ये डेप्थ मुझे आया है मैं उसको एडजस्ट कर पाऊँ। आई एम गोइंग टू पुल इट। आई होप यू कैन सी द डिफरेंस, right? So it's helping me fill in those gaps. Again, here also I'll just slightly pull it, right? So that we are done. यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा I'll do that, मैं वहाँ पे स्मूथ कर लूंगी उसको, बट यहाँ पे I'll just push it थोड़ा अंदर। ये काफी बाहर आया है, so I'm just gonna push it inside lightly so we get a good shape. So now what I'm going to do is I'm going to manually smooth it, local smooth in certain sections. So again, आप चाहिए तो ये वाले रीजन को पुश पुल से भी ठीक कर सकते हैं, बट आई थिंक smoothing will work fine. So this is basically refining your space as required. Right, यहाँ पे भी काफी bumpy है, so I'll just smooth here also and these regions also.
Once you're happy with whatever smoothing and finishing parameters and the shape of your implant, now what we'll do is we'll Boolean union this with a reconstructed condyle. This is where the condyle was. We'll union these two components. तो मैं तो कैसे यूनियन करूंगी इसको? इफ यू सी, इन दोनों के बीच में एक स्लाइट गैप है, राइट? तो ये यूनियन करना इसको डिफिकल्ट हो जाएगा। बुलियन यूनियन उन पार्ट का होता है जिनके सर्फेसेस मर्ज हो। तो हम क्या करेंगे, पहले we'll slightly first trim this part. So I'm going to go to trim. This is my part. I'm going to slightly trim this part. So now I have a flatter surface. And now what I'm going to do is इसका नया part भी बन चुका है। I'm going to use the move surface component जो कल मैंने jigs के लिए आपको दिखाया था। I'm going to use the move surface component, select this surface and adjust the distance to 1. तो अगर मैं 1 से देखती हूँ तो ये just उसको touch कर रहा है। So let's do 1.2. Just lightly. I'm going to click apply. ये components merge हो गए एक दूसरे में। Now what you can do is now you'll Boolean union these components. So I'm going to Boolean union the components, apply. So let me just change the color. Use part color. Right. So this is a base that is formed. Again, यहाँ पे आपको you can see there's a bump when you go up, and you would want something like that to be there in the implant. So we'll go to finish local smoothing. My entity is going to be my union result. I'm just going to rename this as implant base. I'm just going to smooth this manually, the entire thing. तो ये स्मूथ ऑपरेशन और पुश एंड पुल ऑपरेशन, अगर आप में से किसी ने मेश मिक्सर में काम किया रहेगा तो आपको पता रहेगा, जस्ट लाइक योर मेश मिक्सर का ब्लेंडिंग ऑपरेशन और स्कल्प्ट ऑपरेशन. I'm going to do this entirely for this region. ये फाइल काफी हैवी है, तो just let me first decrease the weight of the file. So you can see the difference between this edge and this edge. So fix, improve mesh. Lighter file, finish, local smoothing.
right? So we have smoother thing. Now फ्रंटल रीजन में हमको भी फ्लैंज लगेगा. फ्लैंज इज बेसिकली अ स्क्रू प्लेसमेंट, राइट? आपको स्क्रू फिक्सेशन के लिए फ्रंट रीजन में फ्लैंज लगेगा. तो इफ आई एम सपोज टू टेक माय मैंडिबल राइट जस्ट एज अ कंपोनेंट, तो इस रीजन में मुझे एक फ्लैंज फिक्सेशन लगेगा, राइट? What is the diameter of the screw that you generally use for a fixation of an implant which is something similar? 2.5. 2.5. Okay. So to simulate a screw, what we are going to do is we are going to create a cylinder, right? So you can go to design, create primitive this time, and create cylinder. 2.5 के लिए radius होता है 1.25. So I'm going to set my radius as 1.25, right? And I'm going to use method as 2 points. So let my point 1 be here, क्योंकि screw almost यहीं पे आएगा on triangle surface, and let my point to be somewhere here on triangle surface. Oh, I did not shift my point. So I've now switched the point to point 2, and here it is. So तुम रेडियस 1.25 क्यों रखा? 2.5 का डाया है ना? Okay. Right? So if I have to measure, I have an option of measuring the radius, I have an option of measuring the dia. So it's a 2.5 diameter. So you mentioned 2.5 diameter or 2.5 radius? Diameter. Diameter, right? So basically this ठीक. is, we are simulating a screw, right? So now if you see it's not perpendicular, oblique जा रहा है, तो इसको पहले adjust कर लेंगे mandible के हिसाब से, right? So let's adjust the screw. I'm going to fix my entry point and try and fix. अगर अब मुझे इसको ट्रांसपेरेंट करके देखना है कि ये अंदर कैसे, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी बेसिकली, तो मैं ट्रांसपेरेंट करके देख सकती हूँ कि इसका क्या ट्रेजेक्टरी है. चाहिए तो मैं इसका ट्रेजेक्टरी भी मूव कर सकती हूँ वैसे, as per required, because this is more perpendicular to the surface, right? Fixate something like this as my screw. Again, इसमें हल्का सा आपको नर्व पाथवे आया है. इफ यू सी ये आपका मेंटल फोरामेन है, and this is slight. So when you place your screws, you also know where your nerve pathway is. So accordingly, you can be sure that you're not impinging the nerve. I'm going to create maybe say 4 fixation points for this. I'm going to just duplicate these and accordingly place. Somewhere here. The other could be somewhere here.
राइट? तो वंस यू फाइनलाइज योर स्क्रू लोकेशन, अभी आपको जैसे हमने इसके लिए सरफेस बनाया था जिग के लिए, वैसे इसके लिए भी एक सरफेस बनाना पड़ेगा, राइट? तो फॉर दैट यू कैन यूज टू ऑप्शंस। कल मैंने आपको कर्व के मेथड से बताया था, टुडे आई एम गोइंग टू शो अ मेथड। लेट मी जस्ट डुप्लीकेट दिस, कॉल्ड एज क्रिएट सरफेस। तो आप सरफेस पे जाएंगे, you can use any. Right now I'm using polyline patch, so I don't want to do it on all the visible surface, I want to do it on one particular entity. तो पहले ये ऑप्शन सिलेक्टेड था ऑल विजिबल पार्ट्स, मैंने उसको अनचेक किया, मैंने अपना एंटिटी स्पेसिफाई किया, एंड देन आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस। so I want a surface that just goes something like this, right? Again what I'll do is I will select certain section from here बिकॉज मुझे वो इम्प्लांट बेस के साथ मर्ज करना रहेगा। तो मैं यहाँ से एक स्लाइड सेक्शन ले लूँगी सरफेस का। तो नाउ ये बॉर्डर बहुत हल्का आया है, तो आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस बॉर्डर। बेसिकली यू कीप ड्राइंग what is required from your end. So right click and then you can draw as per your requirement. So I'm going to use filter surface. मैं सारे surfaces जो मुझे ज़रूरी है इसमें से मेरे स्क्रू के लिए वो चूज करूँगी, right? This, and I want this section. So I'm going to separate this. I'm going to copy this into a new part. तो मैंने अभी वापस surface ले लिया। अभी मैं इसका मैंडेबल हाइड कर रही हूँ, मैं सारी सिलेंडर्स को कंट्रोल से सिलेक्ट कर रही हूँ और मर्ज कर रही हूँ एक सिंगल कंपोनेंट में, एंड आई एम गोइंग टू राइट नेम दिस एज screws 2.5 mm. Right now I'm going to hide these. Now these different surfaces that I had selected, I want to merge them. तो मैं merge में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की में उस पार्ट का जो ड्रॉप डाउन है वो क्लिक करूंगी, सरफेस लिस्ट में जाऊंगी, सारे सर्फेसेस सेलेक्ट करूंगी और एक साथ मर्ज करूंगी। once I'm done with that, now I'll give it a thickness, design, offset, uniform offset. मुझे पार्ट को देना है, so I'm going to rename this as flange extension. अगेन एक मिनिमम 2.5 का थिकनेस आइडियल होता है, सो आई एम गोइंग टू कीप अ थिकनेस ऑफ 2.5. और मैंने अप्लाई कर दिया। so once your flange thickness is set, we will then again union the implant base with the flange, so we have one common entity. जैसा जिग के लिए भी हमारे लिए क्लियरेंस इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी एक सॉफ्ट टिश्यू क्लियरेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो I'll once we have boolean union the entire component, या हमने फ्लैंज एक्सटेंशन और इम्प्लांट बेस को एक सिंगल कंपोनेंट बना लिया है, उसके बाद हम उसको अपने ओरिजिनल बोन से सबट्रैक्ट करेंगे। Any doubts still here? Do you want me to repeat any steps?
Anything that was not clear? Do you want me to repeat? Any other doubt? Very difficult to say. मैम यू कैन ट्राई दिस एट योर एंड डेफिनेटली, क्योंकि अगला एक और हफ्ता है आपके पास सॉफ्टवेयर, तो आई अंडरस्टैंड मतलब दैट। सब खिचड़ी पक गई है, so I just don't know कि क्या है। नहीं नहीं, दिस एक्चुअली फॉर मी आल्सो, आई मीन आई एम नाउ बिकम लाइक वेरी अकस्टम्ड टू थ्रीमैटिक, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा फ्री फ्लो लगता है, बट यू कैन ऑलवेज कीप ट्राइंग। अगला एक और हफ्ता है, whenever you feel doubt you can drop me a message. If I'm free or whenever I get time I'll definitely respond. If you require हम screen share भी कर लेंगे या WhatsApp video call कर लेंगे, anybody, for anybody who has a doubt you can definitely call back and let me know. ठीक है, अब तो ऐसा लग रहा है कि पकड़ना मुश्किल हो रहा है, मींस इट्स सो डिफिकल्ट। नहीं नहीं मैम, वो हो जाएगा मैम। सी दिस विल ऑल विद कम विद प्रैक्टिस, इसलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ ना, जैसे मैंने वो स्वीप लॉफ्ट ये सारे अलग अलग टेक्निक्स क्यों दिखाए, बिकॉज किसी हाँ किसी को हर चीज कंफर्टेबल नहीं होती। जैसे आई एम नॉट हाँ कंफर्टेबल विद वन पर्टिकुलर पार्ट बट द अदर पार्ट विल बी कंफर्टेबल। जैसे वो कर्व हाँ बनाना थोड़ा दिक्कत वाला पार्ट हो जाता है, वो कर्व को एडिट हाँ कर्व से स्ट्रेट करते रहना। हम्म। तो फॉर दोज पीपल एनाटॉमी Let's see. रिकंस्ट्रक्शन इज अ गुड ऑप्शन। तो आप अपने हिसाब से ट्रायल एंड एरर कीजिए डिफरेंट प्रोसेसेस का, एंड यू कैन देन अकॉर्डिंगली सेट अ प्रोटोकॉल फॉर योरसेल्व्स आल्सो कि ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इजी आउटपुट आएगा, समथिंग लाइक दैट यू कैन डू एट योर एंड। या या तो इसका ठीक है, थिकनेस, आई विल रिसीव 2 वीडियोस फ्रॉम यू यस, आज ऑर्थोग्नेटिक का आ एंड आई जाएगा हैव आपको। सर्कुलेटेड देम टू ऑल। यस, ठीक आज है ठीक है। ऑर्थोग्नेटिक का भी आ जाएगा आपको। एंड फिर मैम वो जो कल डेटा इट विल बी गुड अगर आप इसी में शेयर कर दो ना मिमिक्स वाले ट्रेनिंग ग्रुप में, हाँ ओके दैट ओके, वुड बी बेस्ट। हाँ, श्योर श्योर विल डू ताकि दैट। हर किसी को मिल जाएगा वो। चलेगा मैम, वही करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो मैम कल जो आपने एमआरआई डेटा दिया था ना, वो हाँ इट्स नॉट एक्चुअली गुड क्वालिटी। मैं आपको दिखा दूंगी एक बार अभी वो स्टार्ट करके टीएमजे के लिए जो डिस्क का था ना पार्ट, तो हाँ उसके जो स्लाइसेस है वो काफी थिक है और इमेज स्लाइस नंबर्स इज आल्सो वेरी लेस। So I think like from now on you'll have to also change your MRI protocol slightly based on हाँ the 3D requirement, because हम हमें ठीक कैसा है। होता है ना, जैसे CT requirement रहती है ना कि minimum slice thickness and higher slice numbers, similarly हाँ MRI का भी प्रोटोकॉल होता है मिमिक्स के लिए। हाँ तो ठीक आपको है। एक सिमिलर प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। ओके। तो I'll just show you that MRI वाला part also today. It'll just take हाँ 5-10 minutes for that. बचा ओके। जो मैम कल सिर्फ मुझे फिब्यूला मिला है एक पेशेंट का, हाँ एंड उसका मैंडिबल या मतलब जो एनाटमी है, हाँ क्रेनियल एनाटमी नहीं मिला उस पेशेंट का, सो आई एम नॉट एबल टू प्लान ऑन दैट। नहीं नहीं, क्रेनियल एनाटॉमी नहीं मिलेगी, ये तो एट रैंडम किसी पेशेंट का ये लोग लेके आए कल सीटी ओके ओके, सो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट यूजिंग से। वील जस्ट डू अ क्रॉस एक फिबुला कॉम्बिनेशन। लाए होंगे, एक आइलेक रेस्ट लाए होंगे शायद। आइलेक, आई थिंक सेम पेशेंट का ही है, उसमें आइलैक रेस्ट भी है, उसमें फिबुला भी है, ऐसा है। हाँ तो जस्ट उसमें आप हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं भी दिखाओ, बस बता दो कि कैसे करना है। मीन्स एक बार आप अपने एंड पे कर लो और शॉर्ट में हमें क्रिस्प सा बता दो कि ऐसे ऐसे करके आपको करना है, ठीक है, ताकि एक बार चलेगा आप मैम। बता तो चुकी हो। हाँ, वो रिवीजन हो जाएगा, पकड़ने के लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अकॉर्डिंगली फिर मैं आज वो कर लेती हूँ, फिर कल वो फिबुला गाइड कर लेंगे। सो नाउ आई जस्ट कम बैक टू दिस फर्स्ट। इसका थिकनेस हो चुका है, सो आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन द इम्प्लांट बेस। तो आई होप यू नाउ अंडरस्टूड कि वो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट क्यों लिया था अंदर से, ताकि हम लोग इसको यूनियन कर पाए। वी हैव अ फ्लैंज एक्सटेंशन टू यूनियन इट, राइट? तो अभी इसको बुलियन यूनियन करेंगे दोनों कंपोनेंट्स को।
तो मैंने इसको सरफेस लिस्ट में जाके कॉमन कलर दे दिया है. सो नाउ यू हैव दिस समथिंग लाइक दिस, राइट. अभी इसको बुलियन सबट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल बोन से. तो हमने ये वाला बोन रखा था, ये उसका मैक्सिला है, समथिंग लाइक दिस, राइट. तो इसको बुलियन सबट्रैक्ट कर लेंगे बोन से. दिस इज बेसिकली टू गिव इट अ क्लियरेंस. So this is my entity. My subtraction entity will be mandible. I'm going to click apply. Right. Close this. I'll hide the different components. So what I want you to observe is the before and after. So तो जो भी पार्ट इसके साथ ओवरलैप हो रहा था आपके बोन के साथ, वो पार्ट निकल गया है. So this is the point on clearance that you can see, right? Now again in these sections also you can do your manual smoothing, जो मैंने आपको बताया था local smoothing. उससे आप इसको एक कॉमन अच्छा सा स्मूथ कर्वेचर दे सकते हैं, right? So once all this is done, your screws are also ready. आप screws को subtract कर लेंगे, right? But अगर अभी आपको इसमें abutment बिठाना हो तो, right? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? Again, the option is now depends on you. Do you want to use a conical abutment or a cylindrical abutment? What do you ideally prefer? So I'm going to show using a conical abutment. Say I want to make a cone. So मैं primitive में गई, मैंने create cone option select किया. My method is 2 point. So I'm going to let my bottom point be here. This I'm randomly selecting. I'm going to realign it later. Right? So आपका abutment कुछ ऐसा आ गया है. इसका हाँ. So this is I've kept my bottom radius is 2.5. My top radius is 2. So it's like a 5 dia bottom and 4 is the dia at the top. I'm going to click apply. Right. So approximate measure 10 mm. It's 11 mm. So yeah. Height. Now coming to abutment placement. So abutment placement with respect to maxilla करेंगे, right? So I'm going to keep maxilla as my reference and the mandible and the mirrored mandible. Sorry, I'm going to hide this. I'm gonna hide the maxilla. तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूंगी. एंड इफ यू सी व्हाट मैंने ट्रांसपेरेंट करके ना, ट्रांसपेरेंट हाई मत रखना, ट्रांसपेरेंसी को मीडियम या लो में रखोगे तो यू कैन सी द टू डिमार्केशंस, राइट? You can, based on the two demarcations, you can align your primitive. So I'm going to go to align. My entity is my cone and I would want to move it slightly interior, somewhere here, right? And give it an angle, right?
So this has to also go inside the implant lightly, and then internally, and then I'm going to pull it down. So this is how you can place abutments. If you want, you can again translate, rotate accordingly as your requirement, change the height. Once it's set, आप इसको वापस यूनियन कर सकते हैं अपने पार्ट के साथ. So let me just keep a single abutment and complete this. मैं इसको फिर से यूनियन कर रही हूँ दोनों कंपोनेंट्स को. Right. So now I'm going to Boolean subtract the screws. So I'm going to rename this as implant with abutment. Abutment. My subtraction entity. Screws के लिए आपको clearance की ज़रूरत नहीं पड़ती because it has to be exact the dia. It has to match the exact dia. So clearance I'll uncheck and I'm going to select screws.